Now we are coming to first kingdom, that is Monera, and it includes all prokaryotes जिसमें कि बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरियाज आते हैं. Clear? So what are the characteristics of Monera? Bacteria comes under Monera. You know very well aware कि bacterias are abundant of the microorganisms. ये हमें हर conditions में survive करते हुए दिखते हैं. Okay, so they are the simplest and most primitive. प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने. दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. फाइन. सबसे फर्स्ट पॉइंट है दे हैव अ सेल वॉल विच you can relate with the chapter of cell. Okay, they are having a cell wall containing peptidoglycans or murine but no cellulose. Okay, they don't have membrane bound organelle. They can have various mode of nutrition like phototrophic, chemotrophic, saprophytic, parasitic, symbiotic. Fine. Then their DNA is not covered by a membrane, that is why it is called as nucleoid. Okay, then they might be having cilia, flagella is made up of a protein called flagellin. Then they can reproduce asexually as well as sexually. Do you remember the word pili? So you can correlate with that. So there is the transfer of DNA from one bacteria to another. Gametes are absent, mitotic spindle fibers are absent. They are the bacterias which can be harmful or they can be useful. A very good is the bacteria, that can convert nitrogen to a useful nitrates. Okay, so these are the various characteristics of kingdom Monera. Then kingdom Monera are classified into two categories, that is the most primitive bacteria. Most primitive bacteria are the archaebacterias and the true bacterias are the bacterias. So I have told you that they can live in a very harsh condition. हार्श कंडीशंस कैसे हैं बच्चे? जैसे बहुत ज़्यादा सॉइल में सॉल्ट है तो दे आर हेलोफाइल्स. अगर नीचे से ज़मीन के नीचे से हॉट स्प्रिंग्स निकल रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ hot water from the Manikaran. We have already studied this example. They are called thermoacidophiles. Marshy places, they are called methanogens, जो कि मीथेन गैस रिलीज करते हैं. Archaebacteria have different cell wall structures for their survival in the harsh conditions. Okay, so they are the most primitive prokaryotes. They can be seen in a great salt lake. They can be seen in a gut of animal, methanogens. They can be seen in a volcanic wall. Okay, so they don't have a peptidoglycan. I told you 9 में पेप्टिडोग्लाइकिन होता है, 9 में सेलुलोज होता है. ओके, सो दे हैव अ डिफरेंट cell type of cell wall because of which it can face or it can survive in an extreme condition. Now we are going to study about the different type of archaebacteria. First of all we are going to study about methanogens. Methanogens क्या होते हैं? या strictly anaerobes. Anaerobes क्या होते हैं बच्चे? Which can respire in the absence of oxygen. You have studied anaerobic. So they are present in the guts of ruminant animal. Guts means द डाइजेस्टिव सिस्टम में. रूमिनेंट मतलब जो हर्बीवोर्स होते हैं जिनमें एक पार्ट जो स्टमक का होता है दैट इज़ अ रूमिनेंट और उसमें प्रेजेंट होते हैं ये. दे हैव 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक, वी हैव सिंगल वन. सो उनके काउज में, बफलोज में, गोट्स में दे हैव such type of bacteria present in them. They produce gas methane which we are using these days in the form of biogas, and they are also produced from the dungs of the animal, cow dung of the animal. Okay, so they are methanogens. Then we have studied about halophiles. Halophiles क्या होते हैं बेटा?
जो कि सॉल्टी लेक्स में, मार्शी प्लेसेस, सॉल्ट हो जहाँ पर, दे आर कॉल्ड एज अ हेलोफाइल्स, वहाँ रह सकते हैं हेलोफाइल्स में। तो दे बैक्टीरियाज आई हैव टोल्ड यू कि इनके पास बहुत एडवांटेजेस भी हैं और हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि बहुत हाई एक्सट्रीम हीट और एसिडिक पीएच में रह सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ थर्मो एसिडोफाइल्स। तो बिकॉज ऑफ एज दे आर लिविंग इन एन एक्सट्रीम कंडीशंस, हम इनको आर्कीबैक्टीरियाज को आज के टाइम में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस प्रोडक्शंस में यूज़ कर रहे हैं, वेरियस एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं, बायोसेंसर्स में यूज़ कर रहे हैं। सो दे आर यूज्ड, बीइंग यूज्ड इन मैनी ऑफ द fields. Now we will be studying eubacteria. So we have already studied about the bacteria. Bacteria was discovered by Antony van Leeuwenhoek. So that is the eubacteria, that is the true bacteria. So the name bacteria